अब देखिए यहाँ पे सिंपल मेथड है, हार्डी-पिंडॉक लॉ किसके लिए लागू हो रहा है, ऑल इसके लिए जितना भी फैक्टर्स होंगे जो एलिलिक है, मतलब कहने का मतलब है कोई भी अगर एलिलिक फ्रीक्वेंसी आप स्टडी करना चाह रहे हैं, अब इसका इम्पोर्टेंस कहाँ पे, अभी हम बोले कि इस पर आधारित बहुत ज़्यादा स्कोर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा थीसिस बन सकता है। आप नेट पे देखिएगा कम से कम 2-3 लाख इसके पेपर मिल जाएगा, जैसे सर्च करिए। और इतना ये इम्पोर्टेंट है कि ग्रासरूट लेवल पे ये जरूरी है, पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डिस्टेंस पे जितने भी आप स्टडी करिएगा, जितना भी पॉपुलेशन जेनेटिक पे मतलब क्लासिकल में, मॉलिकुलर पे नहीं, मॉलिकुलर पे काम करेगा तो कोई डीएनए पे जाना। अगर आप क्लासिकल जेनेटिक्स पे कोई भी वर्क करना चाहते हैं, कोई भी इवोल्यूशनरी फैक्टर का स्टडी करना चाह रहे हैं, किसी भी आपको इवोल्यूशनरी फैक्टर का स्टडी करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको इसकी आवश्यकता है और मगर इसका काम नहीं है। और इसका आप डाटा इकट्ठा कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी बाई एलिलिक स्टडी आप देखिएगा कि एक लिस्ट रखा हुआ है कि मेंडेलियन बाई एलिलिक कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं आदमी। मान लीजिए आप आदमी पे ही शोध कर सकते हैं, आप ज्वेलरी वाले तो आदमी पे ही करिएगा या किसी एनिमल पे करिएगा तो भी कर सकते हैं। अब एक लंबा सा लिस्ट है, उसमें से कोई 10 फैक्टर आप चुन लीजिए जो इजीली आप ऑब्जर्व कर सकते हो, और उसी 10 फैक्टर का अगर आप फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन स्टडी कर लेते हैं तो आपका किसी से उस पर भी तैयार होता है। तो अभी तो तत्काल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन के बारे में हम बता रहे हैं। तो 2 एलिलिक्स है यहाँ पे, हार्डी-पिंडॉक लॉ है, ये 2 एलिलिक्स पहले जो दिया गया किस पर दिया गया 2 एलिलिक्स, और हम 1 डे बिफोर भी बताए हैं कि हार्डी-पिंडॉक लॉ यही बोलता है कि इन द एब्सेंस of the ecological and evolutionary factors, the population frequency, the gene frequency is constant from generation to generation. अगर कोई इवोल्यूशनरी और आपको इकोलॉजिकल फैक्टर मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर किसी पर्टिकुलर लोकस पे ऑपरेटिव नहीं हो किसी पॉपुलेशन में, तो उस जीन का फ्रीक्वेंसी चाहे जितना वर्ष हो जाए उस पॉपुलेशन का, 100 वर्ष हो जाए, 500 वर्ष हो जाए, 5000 वर्ष हो जाए, उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो कांस्टेंट रहेगा उस पॉपुलेशन में। ठीक है, अब जैसे आप इसको अल्टरनेट करते हैं और उल्टा करते हैं तो वो क्या बोल देता है कि इफ द जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी लोकस इज चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इट रिप्रेजेंट्स दैट सम ecological or evolutionary factors is operating on that particular locus। अभी बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पे जब जीन लोकस आप निकालिएगा तो 2 पॉपुलेशन है, बहुत सीधा सा बात है। अगर 200 है यहाँ पे 400 लोकस होगा। अब इस 400 लोकस में कितने के पास P है और कितने के पास Q है, मतलब कितने के पास डोमिनेंट है और कितने के पास रिसेसिव है, इसको आपको कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे रेसेसिव तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन डोमिनेंट जो है वो किस फॉर्म में है, होमोजाइगस फॉर्म में है, हेटेरोजाइगस फॉर्म में है, दोनों फॉर्म में हो सकता है। अगर वो हेटेरोजाइगस फॉर्म में है तो जितना होमोजाइगस जीन है उतना ही नंबर में क्या है उसके पास, सॉरी जितना डोमिनेंट जीन है उतना ही उसके पास क्या है रेसेसिव जीन। तो उसको पता करना थोड़ा डिफिकल्ट, तो डिफिकल्ट है। तो इसको क्या करिए, ये टोटल डोमिनेंट जीन प्लस टोटल recessive gene, that is 100%. Total dominant gene plus total recessive gene, that is 100%. And if you square up, इसको जब if you convert it in the percentile, that is P plus Q बराबर 1. And when we square both sides, then P plus Q square represents P square plus 2PQ plus Q square, and that is equivalent to 1 probability. And when you want to calculate the data available at present, that total number of the 229 and the character is RH and TG. RH and TG. We are calculating the frequency for the RH and TG from any population. And then the n value is 229. And in the 229, only 6 persons are RH negative and 223 are RH positive. That means the 6 represents the value of the Q square. And here, if you convert the 6 into the percentile value, then 6 by 229, that is 0.026. Then the 0.026 represents the value of Q square.
represents the value of QS bar. It represents the value of QS bar. It represents the value of QS bar. And when it converts into the Q, then the value is under root. And it represents the 1.61. The frequency value is the 1. The frequency value of recessive gene, Rh negative gene, is 0.161. That means P minus P equals to 1 minus Q, that is 1 minus 0.161, that is 0.839 is the value of the frequency value of the P. Frequency value of the P. But from here, we don't know that what number in the direct homozygous form and what number is in the heterozygous. In this condition, we explain the value in the form of this equation. Then here the P value represents that 0.703921. 2Q PQ value represents the 0.270158 value, and QS value represents the 0.02. Sorry, Q, not QS value. Or QS value represents the 0.25921. And from here we derive that. From here we derive that the homozygous, that means the plus is 70.39% plus minus allelic form is 27.06% and minus population is 2.59%. Clear? यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट, in multiple element, the gene is present in the multiple form, that is in the more than 2 form. Yeah. And here in the blood group, the 3 alleles are present: allele A, allele B, and allele 0. 0, that means the gene is not responsible for the synthesis of any antigen. It is equal to 0. And in A and B, they are natures, and it is supposed that the AB antigen is developed by the deletional mutation of the O. ऐसा माना गया कि O का जो deletional mutation हुआ उसके चलते A और B का development हुआ, and the antigens is differentiated on the basis of the glycoproteins. इसके ऊपर जो glycoproteins होते हैं उसमें ये vary करता है. अब यहाँ पे here जब ये multiple allele है, so now the P is represented the A blood group, Q is represented the B blood group, and R is represented the OA. That means P, Q, R is equivalent to the 1. And if we consider in the population, that means the 100% population carry P plus Q plus R. In contrast to the Hardy-Weinberg law, where only 2 alleles, that is P and Q, is equal to 1. That is 100%. And here, at first you should calculate the P value, Q value, and R value as per the Hardy-Weinberg law and multiple allelation. And here, for the calculation of the P, Q, and R, at first you should calculate the percentile value of the A, percentile value of the B, percentile value of the O, and percentile value of the A. Here the percentile value is calculated by the total number of individual for particular blood group divided by the total of samples. That is the percentile. And here the percentile value is represented in the percentage data is the calculated by the 3 by 15, because the A blood group has the 3 persons has the A blood group, and B 20% has the B blood group, 30% has the O blood group, and 9% have the A blood group. Here the A is represented both gene A and B, and here A also represents the A and B also represents the B. Why so? AB is excluded from the calculation, and the P is directly calculated by 1 minus Q bar plus R bar.
under Q is calculated by 1 minus P bar plus R bar under root and R is calculated by the root under R. And here the value in the present value, the P is represented 0.1437, Q is represented 0.4038 and R is represented by the 0.5394. And for the data available by the calculation of the P, Q, R directly from the sample represented that the 14.3%, the allelic frequency of the P or the gene frequency of the P is 13.37%, because the frequency is also always represented in the form of percentage. Gene frequency. That means the gene frequency of the P is 14.37, gene frequency of the Q is the 40.38% and the gene frequency of the O is the 53.74%. Q and gene frequency value of the R, it is exceeded from the 1. That means it is exceeded from the 100%. It is not possible for the action. Why so? The Bird scale, a name of scientist, represented the correction value. And it is referred as the Bird scale correction. It is referred as the Bird scale correction. And now the corrected value is represented by PC, QC and RC. RC means correction. And here the D is represented, D represents the deviation. D means deviation. And deviation 1 minus the total value of the PQR calculated directly from the sample. And here the calculated value is minus 0.0849. Why so here in the PC value we calculated 1 plus half D, the QC value is calculated by 1 plus half D Q and the RC value is calculated by 1 plus half D multiplied by R plus half D. And here when we calculated the values of the PC, QC and RC, frequency of the A, B and O and AB, then the calculated value of the A blood group is PC square plus 2 PC RC blood group. For the blood group B, QC square plus 2 QC RC plus for O, that is the RC square, and for the AB 2 PC QC. The value and the ratio is directly derived from the Mendelian principle. बात कहीं से नहीं आया, it is derived from the Mendelian principle. And here the calculated value for the A is 14.49%. The calculated value for the B, that is 51.61%. That is O, for the O, the value is 22.45%. And for the AB, the value is the 10.64%. That means it is the percentage prevalence of the blood group in the population studied value. And now, when we differentiated or want to determine the genotypic nature, then we determine the AA, allelic combination AA by the PCA square, allelic combination IA, I0 by the 2 PCRC, allelic combination IB, IB, IB by the QCA square, the allelic availability of the I0, that is 2 QCRC, IO is represented by RCA square and IB is represented by the 2 PCRC. यहाँ पे लिखा हुआ 2 PCQC. That means here it is the genetic frequency. When you want to study the genetic combination, then there is also need for the, यहाँ पे बहुत सब का मतलब अलग-अलग है. If the heterozygotic nature is more prevalent, then people will differently. If the homozygotic prevalence, because the gene frequency, just I am telling that the evolutionary and environmental factor has a direct impact on the locus. उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट लोकस होता है. तो अगर हेटेरोजाइगोसिटी किसी भी जीन का अगर वो
फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसका मतलब उसके सर्वाइवल से जुड़ेगा। निश्चित तौर पे अगर आप उसको एनालाइज करिएगा, पेपर एनालाइज करिएगा तो कहीं ना कहीं दो ही चीज़ से वो जुड़ेगा, या तो उसके सर्वाइवलशिप से जुड़ेगा। सर्वाइवलशिप से अगर जुड़ेगा इसका मतलब कि वो उसके इवोल्यूशनरी डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, या वो उसके इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट से जुड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप लोग पढ़े हुएगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन पढ़े हुएगा, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन पढ़े हुएगा, जेनेटिक ट्रिस्ट पढ़े हुएगा, जीन फ्लो पढ़े हुएगा, ये सब क्या है? ये सब इवोल्यूशनरी फैक्टर्स है। तो कहीं ना कहीं इस कंपोनेंट से वो जाके जुड़ेगा। And if we analyze the blood groups here, that you determine on the basis of the blood group only, you are in a position to differentiate the population of the any geographical area. किसी geographical area के भी अगर population को आप simply अगर differentiate करना चाहें, तो आप इसके blood group differentiation differentiate कर सकते हैं। So by this way, we calculate the blood group frequency of the allelic frequency of the blood. Clear? And when we want to determine the allelic frequency of the multiple allelism has no codominance, और वहाँ पर codominance नहीं है, तो it is simply you remove this part. जैसे इसके प्रिंसिपल से इस पार्ट को रिमूव करिएगा तो क्या होगा? ये डायरेक्ट देने लगेगा मल्टीपल एलिमेंट के नेचर, और ये मल्टीपल एलिमेंट आपका जो कंपोनेंट होगा वो शुरू में यहीं पे क्या हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है? और